everyone, Namaste, Namaskaram. Welcome back to Reams Dreams channel. Today we are here discussing our third round of final day of Qatar Airways interview. Final day of Qatar Airways interview, which is gonna be personal round. Once you are selected from GD, they will give you time, allocate you time to come for the personal round. आपको वो बता देंगे कि आपको किस टाइम पे इंटरव्यू के लिए आना है to avoid crowding. और उसके बाद फाइनल राउंड इज गोना बी मोर फन गाइज. नाउ बाय नाउ 3 दिन वो आपसे लगातार मिलने के बाद, आपसे इंटरेक्शन होने के बाद, दे विल कम टू नो लिटिल बिट अबाउट योर पर्सनालिटी. तो वो आपसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. फाइनल राउंड विल बी इन अ मोर क्लोज कंपार्टमेंट, लाइक मोर क्लोज रूम. छोटा रूम होगा, 3 या 2 जितने भी हैं वो बैठे होंगे. आपके लिए एक यहाँ पे चेयर होगा. यू कैन से ऑलमोस्ट 1 hand डिस्टेंस पे. इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम. दे कैन सी आवर मेकअप क्लियरली, दे कैन सी आवर स्किन क्लियरली, everything, every scar, anything, if it is there and I'm not able to hide it like it was, they will be able to notice everything. फाइनल राउंड को क्लियर करने के लिए आई विल टेल यू टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स. इवन इफ यू आर नर्वस, you will not be, to be honest, that much you will not be nervous, because by now you will be also little comfortable with the interviewers. You are watching them, you are meeting them from last 2-3 days, तो आप भी थोड़ा comfortable हो जाते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वही बता रही हूँ आपको. तो जब फाइनल राउंड के लिए मैं चाहती हूँ कि आप वेल ग्रूम्ड जाएँ, बहुत ही अच्छे से, जो भी मैंने आपको डे 1 बताया है वैसे ही जाना है बिल्कुल. और अगर उन्होंने आपको कुछ पर्सनली चेंज करने बोला है, लाइक मुझे बोला था लिपस्टिक डार्क चाहिए और मैंने थोड़ा सा पफ बनाया हुआ था, वो उन्होंने बोला था नहीं चाहिए, तो ये सब मैं चेंज करके थर्ड डे आई थी, लाइक एज दे टोल्ड मी टू बी देयर. तो थर्ड डे अब क्या होता है कि दे विल आस्क यू अगेन, बी वेरी पोलाइट, नाइस, smiling, body language positive, be excited to, like, show that excitement that you are ready to join them and you are ready to work. They are not looking forward to join only kindergarten people who is just 20 or 21 year old but not matured at all. आप में एक maturity देख रहे हैं कि आप मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे और आप इसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं. तो गाइज आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू फ्रॉम नाउ, अभी आपके पास बहुत टाइम है अपने रिज्यूमे को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. गूगल पे कोर्सेज चेक करें, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री में हैं. कल्चरल अवेयरनेस, टीम वर्क, हाउ टू वर्क इन अ टीम, emotional intelligence. If you want to write it down. Cultural awareness, working with team, how to work in multicultural environment, like that. Search something like this, and then emotionally intelligence. These are the few courses which is available online. Few are even free if you don't need certificate. If you need certificate, you might need to pay $30 or $35, but it's not expensive at all. It will add value to your resume. So they will say that, okay, you were preparing all this while. The only goal in their life and they were heading towards it since this time. They might ask you that all this while what you were doing. ये 2 साल जो कुछ भी नहीं हुआ एविएशन में, आपने क्या किया. तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो. If you need any help in knowing more courses, I will search and let you know. But these are the common thing which I can tell you can do. And if you are experienced cabin crew, you can check on leadership, any course available on leadership and how to lead the team and all. Also resume में जो भी आपने लिखा हुआ है उस टाइम पे, they will go through it and they might pick some questions from your resume. So for example, if I am writing that I was doing coaching of I was taking this course of multicultural environment, they will ask me question. Of course they will not let me leave like that, but all the answers. Even if you're writing single thing in your resume, do not put yourself in a situation which you don't know and somebody else is preparing your resume for you. तो एक बार सारा पढ़ लेना और सबका जवाब जेन्युइनली नेचुरली आना चाहिए. ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यू आर लाइंग और समथिंग. इवन इफ यू आर लाइंग, lie at that perfection that they should not come to know that you just wrote it because you wanted to write and you haven't done any course.
Generally, this round is gonna be more interactive basis, one-on-one questions. They will ask you something, they will wait for reply, and that something can be why you wanna be cabin crew, what is your background, will you be able to adjust in Doha, heat is too much, the culture is different, you know. So then you can use all these. Yes, I will be able to adjust because I was reading all these things and I have done even few courses which involves this and which involve multicultural environment related informations. They'll be like, oh really? So you know, it is already creating impact that this person is truly willing to join cabin crew and willing to work. Qatar Airways is an airline which is hiring to work. It's apart from looking glamorous and giving you 100% in the interview will not work. They will judge you on the basis of ये जाके वहाँ काम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं. They will be like no no no, I will not be working. Oh God, I can't lift this, I can't do that. ऐसे वाले लोग उन्हें नहीं चाहिए. अगर आपको डाउट है you can't take the plate, you can't do this and that, वो आपको उसी टाइम मना कर देंगे आने से and they might even judge you. तो अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस और अपना रिज्यूमे ऐसा ही बनाए जो उन्हें लगे कि यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड यू आर विलिंग टू बी देयर, यू आर विलिंग टू बी क्रू, you are really looking forward to be in that uniform. Learn some new language, be productive right now. It might take 1 more year and they will restart hiring freshers. तो guys, जितना भी कर सकते हो, I am doing from my side, I am giving you information, I am reaching to all of you whosoever questions you are asking. उसके अलावा आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा आता है जो मैंने नहीं कवर किया है, मेक श्योर आप कर लें और मुझे भी बताएं कि ठीक है ये कर सकते हैं कि नहीं, इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक. लेकिन डू समथिंग, यूटिलाइज दिस टाइम इन योर फेवर. ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन अपॉर्चुनिटी विल कम, you will not have time to waste it. I want you all to crack your interview in one go because you never know if it comes. It might not come very quickly, frequently how it used to be, looking at the situation right now. So be prepared for worst, like maybe this is my last chance. Just prepare like that. I'm not saying this will be your last chance. Even if you lose it, doesn't matter. Learn something and go again. You will be there. ठीक है? So on that note, I hope this video was useful, and if you are missing any information and if you are willing to talk to me, I am coming live as I announced. It will be on Sunday and we will discuss everything, prepare all your questions and come back to me. Bye bye.